क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिला, यह भी सही वो भी सही। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। हाउ आर यू? होप all of you are very fine. I am Sushil Shukla and you are watching me on this platform. Dear friends, the secret of success is continuous struggle. You must work hard silently and remember your efforts will make you champion one day. I have started the series of smart words that are going to make your English richer, better and smarter. Dear friends, in today's segment, we are going to discuss 5 smart words that are going to make our English better. And after this class, we are going to use them in our day to day English conversation and we will make our English better, smarter, and richer. So, dear friends, are you ready? Let us start the first word. The first word of this segment is quarantine. I suggest to you to have a pen and paper so that you can write down these 5 smart words of today's segment, and after this class you may use them in your day-to-day English conversation. Quarantine. क्वारंटीन आपने सुना होगा। इस समय ये जो आपकी कोरोना बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है विश्वव्यापी, इसमें इस शब्द को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। क्वारंटीन, समवन हु इज बीइंग आइसोलेटेड। जब किसी को आइसोलेट किया जाता है, अलग थलग किया जाता है, तो इस शब्द का बहुत प्रयोग किया जा रहा है, क्वारंटीन। एंड यू हैव सीन दैट पीपल हु आर आइसोलेटेड आर रनिंग फ्रॉम द क्वारंटीन सेंटर। आपने देखा होगा कि क्वारंटीन सेंटर से बहुत सारे जो जिन्हें आइसोलेट किया गया है वो भाग रहे हैं, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. So this was the first word, and the next word for you today is pandemic. Pandemic, P-A-N-D-E-M-I-C. Pandemic, you know. Pandemic means होता है विश्वव्यापी महामारी, पैंडेमिक, और एक और होता है एपिडेमिक और एंडेमिक. एपिडेमिक और एंडेमिक स्थानीय महामारी को कहा जाता है, जबकि पैंडेमिक विश्वव्यापी महामारी को कहा जाता है. So COVID-19 is the pandemic today. You well understand what actually I want to tell you. Pandemic that has become the pandemic in all over the world. So this was the second word, and now the third word of today's segment is martyr. Martyr, M-A-R-T-Y-R. M-A-R-T-Y-R. You know, martyr means shaheed. Shaheed, someone who dies for the sake of the country. कोई ऐसा जो देश की रक्षा के लिए मर जाता हो. Someone who dies in defense of the country. So this was the third word, and the fourth word of today's segment is bankrupt. Bankrupt, B-A-N-K-R-U-P-T. B-A-N-K-R-U-P-T. Bankrupt means दिवालिया होता है. One who is unable to pay his debts. वो जो अपने डेब्ट्स को देने के लिए असमर्थ हो. डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना चाहिए कि ये जो सारे वर्ड्स हैं ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इन मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी पूछे जाते हैं. सो दीज 5 words are really going to be very important for you. So the last one word for today's segment is fatalist. Fatalist, F-A-T-A-L-I-S-T. So who is a fatalist? Fatalist का मतलब भाग्यवादी होता है. One who believes in his fate. जो अपने फेट में यकीन रखता हो उसे हम fatalist कहते हैं. Fatalist, one who believes in his fate is called fatalist. So dear friends, these were the 5 smart words that you are going to use in your day-to-day English conversation, and remember these 5 words are also important for your competitive exams. आप किसी भी competitive exams की preparation कर रहे हो, and definitely these 5 words are going to be very useful and beneficial for you. Dear friends,
आप अपने कॉन्फिडेंस को जरूर बिल्डअप करें एंड डेफिनेटली यू मस्ट नो लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं. So remember, this was the today's segment, and in today's segment we learned 5 smart words that we are going to use in our day-to-day English conversation. And remember, these 5 words are also very important for your competitive exams. So meet you again tomorrow on the same platform, same time. Till then, stay home, stay safe. Thank you very much. But remember, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं. Thank you very much. Thank you once again.